you all and my screen is visible. अगर आप लोग कंफर्म करेंगे कि मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है और मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है तो हम लोग वेबिनार को स्टार्ट कर देंगे. जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स और इन द चैट बॉक्स, क्वेश्चन बॉक्स, whatever you are seeing, just let me know please. All right, so I have got some of the responses that it's all perfect now and we can start. So today's topic is very, very exciting and it's very interesting as well. Just imagine that some stock or the market or any index is going up, okay, and you have missed the entry. Okay, I'm going to keep it mix in Hindi and English. जब भी आप इमेजिन करो कि कोई स्टॉक या फिर इंडेक्स, लेट्स से कि निफ्टी इतना ऊपर चढ़ चुका है, तो आप इमेजिन करो कि एक रैली स्टार्ट हुई है एंड यू हैव मिस्ड द एंट्री इनटू इट. हाउ डू यू फील अबाउट इट? यू फील बैड, राइट? बट आप पेशेंटली वेट करते हो कि कब आप एक सही एंट्री उसमें कर पाओगे, करेक्ट? बट वो सही एंट्री कहाँ पे होगी, कितना रिवर्सल होने के बाद आपको एंट्री करनी है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, राइट? इट्स अ बिग क्वेश्चन फॉर यू. When and how much reversal will that entity take, and will that be a good entry for you? Will that be a good level for you to enter into that particular entity or not? That becomes a very complex, decision for you to make, correct? So in such situation, wouldn't it be great if you get to know, till what level that particular entity can retrace, and then it will again continue to the, previous trend, or if it is a reversal, if you get the clues on your screen, wouldn't that be great, right? So आज जो हमारा webinar का topic है, the topic is decoding Fibonacci retracement. This is the best indicator for the trade entries and exits. So we are going to talk about the Fibonacci retracement. There are a lot of misconceptions about even drawing the Fibonacci retracement. So many people do not know how to perfectly draw it onto the screen, and that is why they are not able to use it. So today we are going to discuss it all. We will go forward and start off with the session. All right, I hope you all are going to love this particular topic. But before going forward, I'll read a standard disclaimer for you all. The content and explanation shared in this webinar are only for information and educational purpose. Stock market trading investments are subject to market risk. Please consult your financial advisor before making financial decisions. All right, we are all ready. So before going forward and touching to the Fibonacci retracement, just little bit let's go into the history and see where did it come from. हम लोग पूरा Fibonacci retracement को टच करने के पहले एक बार देखेंगे कि भाई ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है. ओके, सो द मैथमेटिशियन लियोनार्डो पिसानो, निकनेम्ड Fibonacci, इनका निकनेम था Fibonacci. ओके, identified the key numbers in the 13th century called as Fibonacci numbers. तो ये तब से चलता आ रहा है, बट स्टॉक मार्केट में ये कुछ रिसेंट प्रीवियस ईयर से इंट्रोड्यूस हुआ है. ओके, सो लेट्स गो फॉरवर्ड. सो फिबोनाची के जो मोस्ट नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 0 एंड 1. तो 0 और 1 को यूज करके एक सीरीज ऑफ नंबर्स बना है, ठीक है? तो वो सीरीज ऑफ नंबर्स कैसे बना, हमें फिबोनाची सीक्वेंस कैसे मिलता है, वो हम लोग एक बार देखेंगे कि उसका लॉजिक क्या है. ऑलराइट, नाउ इसमें हमने क्या किया, 0 और 1 ये जो हमारे बेस नंबर्स है, तो इसको हमने ऐड करना है. 0 + 1 = 1, तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल गया. ओके, now we will add last two numbers. 1 + 1 2, again same. 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, and so on and so forth. Okay, this is the way we are going to find out the sequence. Okay, these are the Fibonacci numbers. This is the Fibonacci sequence. All right, so आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, but you should know the logic behind whatever numbers and ratios we are going to study into the Fibonacci retracement. So that is why I'm covering all this. So there is something called golden ratios. Okay, so golden ratios आगे मैं आपको बताऊंगी, but वो आए कहाँ से और उसके पीछे का कैलकुलेशन क्या है. जो हमने सीरीज निकाली थी, ये 0 1 2 3 5 8, ये जो सीरीज है, इसमें अगर कोई भी दो नंबर आप
इसका कैलकुलेशन करोगे, फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये सारा आपको डिटेल में, यू आर एबल टू सी इट ऑन द स्क्रीन, आई एम नॉट रीडिंग ऑल, reading all of this for you. I'll just explain the logic behind the calculation. If you divide this 89 by 55, what will happen? You will get 0.61798. okay, you are dividing 55 by 89. नेक्स्ट जो आपका नंबर है जो है 0.381, वो आपको कहां से मिलेगा? इफ यू डिवाइड 34 बाय 89, तो आपका ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन द नंबर्स, जो भी एक नंबर है उसके प्रीसीडिंग नंबर को आप डिवाइड करोगे, उससे आपको 0.617 का नंबर मिलेगा. ऑलराइट, जब भी आप एक और नंबर राइट लेफ्ट साइड में मूव करोगे तो और उसको फर्स्ट नंबर से डिवाइड करोगे, आपको 0.381 का नंबर मिलेगा. तो दिस इज कांस्टेंट फॉर होल ऑफ द सीरीज. ओके, so this is how we get the golden ratios. Okay, that was not very important to get to know the calculation behind that, but it was important to know the logic. Okay, so that was the logic which I answered you. Now what are the important ratios? हमें whenever we are going to draw the Fibonacci retracement on the chart, what are the numbers or what are the ratios or what are the levels which are important? Okay, that are 23.6, 38.2, 50, 61.8 and 100. Okay, these are the only important numbers for us. Now how does Fibonacci ratios relate to stock market? अब जो भी हम लोग ये बात करने वाले हैं, Fibonacci retracement, sequence, golden ratios, तो इस सब का स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना है, हम लोग को क्या इसका यूज होने वाला है. ओके, हम लोग एक एक करके देखेंगे. Fibonacci retracement levels are horizontal lines that indicate the possible locations of support and resistance levels. So सबसे important बात क्या है कि हमें जो भी Fibonacci retracement में जो भी levels उसमें form होते हैं वो horizontal lines होते हैं. So they come out as support and resistance levels. Okay, so आप अगर manually भी support और resistance नहीं draw कर पा रहे हैं तो this will serve the purpose. Alright, second, each level is associated with one of the above ratios or percentages. So ये जो हमारे पास ratios आए हैं, इन ratios के basis पे ही हमारे जो भी support और resistances के level हैं वो dependent है. Okay, it shows how much of a prior move the price has retraced. So basically ये और अगला point हम लोग एक साथ ही ले लेते हैं. The direction of the previous trend is likely to continue. However, the price of the asset usually retraces to one of the ratios listed above before that happens. So जब भी कोई move market में आती है, let's say कोई up move है, ठीक है, तो up move एक candle में नहीं आएगा या one sided move नहीं आता रहेगा, या फिर जो भी कोई down trend है, if there is a down trend, it will not keep going downwards in every single candle, right? It will come up, go down, it will come up, go down. So that way it is going to be a uptrend, or whenever it is going down, it will go down a little bit, come over, and again it will go down, again it will continue, right? That way it will continue in a downtrend. So what I meant to tell you is that whenever we are going to have any kind of a trend into the market, we will not have it into a straight price action. We will have some kind of retracement, we will have some kind of pullbacks. So those pullbacks are called retracements. All right, and this particular Fibonacci retracement indicator can perfectly show you till what level you can get that retracement, or until what level this is a continuation of that trend. Okay, or above or below what level this is a reversal of the trend. So based on the levels, you can decide if the trend is going to be continued, if the trend is going to be reversed, or if this can be a good entry for you to continuation into that trend. All of those answers can be answered with this particular indicator. All right, so let's go forward. How Fibonacci retracement helps traders. This is the simplest version. Supports, you get the supports, resistance levels. All right, so based on that you can derive your stop loss, you can take out your targets, and there is one more advantage which is associated with the Fibonacci retracement, is that even if you are very good with your charting, what will happen when some stock or when some entity goes into the all-time high levels or all-time low levels?
right? So let's say all-time high level. So now you cannot really draw anything because the price in the history was never ever on that particular level. So how will you draw your support or resistances, or even trend lines or anything? How will you draw it? So in such conditions, this Fibonacci retracement can be very helpful for you to understand your support resistances and to decide good levels of the entries if you have missed that particular a move. All right, so let's go forward now. How to draw Fibonacci retracement? This is the first and most important questions. Okay, so I have taken the screenshot. So on the chart you can get all of these tools, right? So here you can get Fib retracement. This is nothing but Fibonacci retracement. All right, so whenever you're going to draw the Fibonacci retracement, first is the most important point कि आप वो Fibonacci retracement कब draw करने जाओगे, आपको कब जरूरत पड़ेगी कि आप Fibonacci मुझे चेक करना चाहिए। एक, जब कोई ट्रेंड आपसे मिस हुआ है, करेक्ट, और उस ट्रेंड में अब आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है, तो नाउ यू वांट टू नो इफ दिस प्रॉफिट बुकिंग इज गोइंग टू बी if it is going to be even going downwards, or if this particular move is going to get continued to the previous uptrend, right? ये जो क्वेश्चंस होते हैं जब आपके माइंड में आएंगे तभी आप फिबोनाची की तरफ जाते हो, करेक्ट। सो वो लॉजिक मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि उसी हिसाब से आपको उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट डिसाइड करना होता है। ऑलराइट, नाउ इफ यू सी ओनली दिस पार्ट, ये जो पार्ट है, दिस वी आर गोइंग टू इग्नोर फॉर नाउ। ओके, जस्ट इमेजिन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, दिस चार्ट इज ऑफ रिलायंस, ये रिलायंस का चार्ट है। आप इमेजिन करो कि यहाँ से ये जो मूव है, ये मूव स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ तक ये स्टॉक आया, आपने इसमें एंट्री नहीं करी, यू हैव मिस द एंट्री कंप्लीटली। ओके, बट यहाँ से इस स्टॉक ने थोड़ा बहुत अभी प्रॉफिट बुकिंग दिखाया। सो नाउ यू थिंक दैट अभी मुझे एंट्री करनी चाहिए क्या, या फिर आगे इसमें क्या हो सकता है कि, या फिर ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया क्या? तो आप क्या करोगे, फर्स्ट कि आपको पहले ट्रेंड पता होना चाहिए। तो आपको ये आंखों के सामने दिख रहा है कि ये अप ट्रेंड है, ठीक है। सो जब भी अप ट्रेंड होगा आप फिबोनाची नीचे से ऊपर तक ड्रॉ करोगे। यू आर गोइंग टू ड्रॉ द फिबोनाची इनटू द अप ट्रेंड फ्रॉम बिलो टू अपवर्ड्स। Okay, you will go upwards into the Fibonacci retracement whenever you will draw it into the uptrend. All right, now यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट करके इस पॉइंट पे एंड करोगे और फिर उसको एक्सटेंड करोगे। व्हाई विल यू एक्सटेंड? बिकॉज यू वांट टू सी द फ्यूचर प्राइस एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल्स एज वेल, राइट। सो यहाँ पे मैंने आपके रेफरेंस के लिए दिखाया है कि अप ट्रेंड जब भी होता है आप अपवर्ड्स ड्रॉइंग करोगे, जब भी डाउन ट्रेंड होता है आप डाउनवर्ड्स ड्रॉ करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी इसका मैंने अपवर्ड्स का फिबोनाची लगा के आपको दिखाऊंगी मैं, बट मैं एग्जाम्पल आपको इसका भी देती हूँ कि मान लो कि यहाँ से यहाँ तक आपने ये ट्रेंड देखा है, ठीक है, दिस इज अ डाउन ट्रेंड। नाउ यहाँ से आपने एंट्री मिस करी, यहाँ तक ये आया, और मान लो कि यहाँ इस पॉइंट पे आपको ये लगा कि अभी ये दिस इज अ रिट्रेसमेंट, नाउ आई वांट टू डिसाइड until what level this can go. So आप फिबोनाची कैसे ड्रॉ करोगे? Your starting point is going to be this, the top of this particular candle and the low of this particular candle, ठीक है। ये दो पॉइंट आपके टू कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने के towards the downside, okay, whenever there is a downtrend. All right, I hope it is clear now. So let's go forward. जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, दो पॉइंट्स कौन से थे, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई। ओके, सो इसको मैंने अपवर्ड्स एक्सटेंड किया और राइट में और एक्सटेंड कर दिया, बिकॉज आई वांटेड टू सी दीज लेवल्स, राइट। दिस इज अ हिस्टोरिकल चार्ट, सो आई वांटेड टू चेक इफ द प्राइस हैज रिस्पेक्टेड दोज लेवल्स और नॉट। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द फिबोनाची रिट्रेसमेंट। जो भी आपका अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में आपका जहां से अप ट्रेंड वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो स्टार्ट के कैंडल का लो और जहां पे आपका अप ट्रेंड का टॉप पॉइंट है, ओके, वहां का आपका हाई ये रहेगा। एंड डाउन ट्रेंड में आप स्टार्ट करोगे, जो अपर पॉइंट होगा
जहां से आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ठीक है, वेरी स्टार्ट ऑफ दैट डाउन ट्रेंड, दैट पॉइंट एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ दैट डाउन ट्रेंड, राइट, दीज आर द टू कॉन्टैक्ट पॉइंट्स इनटू द डाउन ट्रेंड। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अभी आप देख सकते हो कि ये हमारे लेवल्स मिल गए हैं, ठीक है। सो रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट द गोल्डन रेशियोज, यू कैन सी ओवर हियर, ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं ये हमारे गोल्डन रेशियोज है, ठीक है। 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, करेक्ट, दीज आर द गोल्डन रेशियोज दैट वी डिस्कस्ड। अभी इस वाले स्क्रीन में आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना है, इसमें सिर्फ आपको यही समझना है कि कैसे हम लोगों ने फिबोनाची ड्रॉ किया और कहाँ पे आपको ये जो रेशोज है या फिर जो भी हमारे नंबर्स फिबोनाची के देखने को मिलते हैं या फिर जो भी लेवल्स हैं वो कैसे देखने को मिलेंगे। जस्ट गेट फेमिलियर विद दिस पर्टिकुलर स्क्रीन, ओके। नाउ आई विल after this I will explain you how do we take something meaningful out of this particular drawing, okay। So ये सेम ड्राइंग है, ओके। जो भी चार्ट पे हम लोग ने फिबोनाची ड्रॉ किया था उसी पे मैं आपको अभी कंटिन्यूएशन कैसे फाइंड आउट करना है वो बताऊंगी। कंटिन्यूएशन मतलब ये पर्टिकुलर एक अप ट्रेंड था, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर अप ट्रेंड का हमें कंटिन्यूएशन कैसे कंफर्म करना है कि ये अप ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू होना है, ये ट्रेंड का रिवर्सल नहीं हुआ है, ये हमें कैसे डिसाइड करना है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ओके। तो जो भी हमारे लेवल्स है, अभी मैंने आपको ये सर्कल नोट डाउन करके दिखाया कि ये एक जो पर्टिकुलर प्राइस है वो अपने जो फिबोनाची के लेवल्स हैं उसी पे कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रही है, करेक्ट। दिस पर्टिकुलर प्राइस इज रिएक्टिंग ऑन द लेवल्स विच वी आर गेटिंग थ्रू फिबोनाची, राइट। So this is not something magic. This is why I'll tell you the reason. जब भी हम लोग कोई अप ट्रेंड में होते हैं तो अप ट्रेंड में प्राइस फिबोनाची के जो लेवल्स हैं उस पे सपोर्ट फाइंड आउट करेगी, ठीक है। प्राइस विल टेक सपोर्ट ऑन द फिबोनाची लेवल्स व्हेन देयर इज अ अप ट्रेंड, okay। So now you know how do you get the support levels, right? And in, I'll just tell you, okay। And whenever there is a downtrend, what will happen? The price will face the resistance on the Fibonacci levels, okay। So अभी बस इतना ही आप याद रखो कि अप ट्रेंड में आपको सपोर्ट मिलेंगे लेवल्स के थ्रू और डाउन ट्रेंड में आपको रेजिस्टेंस लेवल्स मिलेंगे इसके थ्रू, ओके। सो अभी आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि यहाँ से यहाँ तक आपका ट्रेंड ऑलरेडी था, यहाँ पे आने के बाद आपने ये लाइंस ड्रॉ करे। इसके बाद आपको ये डिसाइड करना है, यू हैव टू डिसाइड इफ दिस ट्रेंड इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड और नॉट, राइट। सो यू हैव टू सी इफ दिस पर्टिकुलर प्राइस इज टेकिंग सपोर्ट ऑन the Fibonacci levels or not, okay। So this is taking the support on the Fibonacci level, but कौन से लेवल तक ये सपोर्ट लेगा तो ही ये अप ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में होगा, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल है क्या? यस। So we have to be careful to watch this 0.618 level. This is a very very important level, okay। So अगर कोई भी ट्रेंड कंटिन्यू होना है तो प्राइस, let's say this is a uptrend, okay। So if this particular uptrend has to be continued, then this particular price will have to stay above 0.618 level, okay। So if you can see, यहाँ पे भी इस प्राइस ने 0.618 पे ही सपोर्ट लिया और फिर पूरा रिवर्स हो गया। देन अगेन इवन दो यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ तो भी 618 पे इसने सपोर्ट लिया और फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया, करेक्ट। सो what we have to see this 0.618 level। if अगर के प्राइस बहुत ही ऊपर है तो आपको ये हर लेवल एज ए सपोर्ट काम करेगा, ठीक है। बट आपका लास्ट सपोर्ट क्या होगा अप ट्रेंड में? 0.618, okay। so what will be your best entry into the uptrend for the if you have missed the earlier trend and now if you want to enter into the retracement, what will be the best entry? The 0.618 level, okay। this can give actually a very good risk to reward ratio, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा आएगा और आपके टारगेट्स काफी बड़े हो सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री वो सब हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, बट
Right now, just understand how do we find the continuation of the trend. Okay. Now let's go forward. Now, how do we find the reversals using fib retracement? Reversals हमें कैसे पता चलते हैं? तो रिवर्सल में क्या होता है कि हमारा ये कोई, अब इसमें मैंने आपको डाउन ट्रेंड का एग्जांपल दिया है, ठीक है? डाउन ट्रेंड का रिवर्सल होके कहाँ पे जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, करेक्ट? सो वो हमें कैसे फाइंड आउट करना है? इसके पहले हमने क्या डिसाइड किया था, क्या डिस्कस किया था कि कौन सा लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, विच लेवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल इन द फिबोनाची फॉर द ट्रेंड कंटिन्यूएशन? 0.618 लेवल, करेक्ट? यहाँ पे अगर आप देखते हो, यहाँ से मैंने फिब का स्टार्ट पॉइंट लिया है और यहाँ पे एंड पॉइंट लिया है, ठीक है, और इसको एक्सटेंड कर लिया है। अभी मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन देगा या फिर रिवर्सल देगा, राइट? सो फिब में मुझे क्या दिख रहा है कि 618 को भी क्रॉस करके ये ऊपर चला गया और ये पूरा ट्रेंड ही रिवर्स हो गया, इट डिड नॉट कम डाउन अगेन, करेक्ट? So this particular level you have to be very much watchful of, all right, and you will get a very clear clue कि भाई ये continuation है या फिर reversal है, okay? So this is the reversal. Now what we are going to see, the fib retracement for all time high level entries, ठीक है? तो ये जो चार्ट मैंने आपके सामने लगाया है ये निफ्टी है, ठीक है? अभी अगर हमें ऑल टाइम हाई के बारे में बात करनी है तो देर इज नथिंग बेटर देन निफ्टी राइट नाउ, करेक्ट? सो हम लोग यहाँ पे निफ्टी के चार्ट को डिस्कस करेंगे। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, ऑफ कोर्स दिस इज ओनली फॉर द एग्जांपल बेसिस, प्लीज डू नॉट डिराइव एनी काइंड ऑफ ट्रेड्स आउट ऑफ दिस, आई एम ओनली ट्राइंग टू टीच यू समथिंग। सो दिस इज अ 1 डे चार्ट ओवर हियर, और जहां से हमारा ये जो अप ट्रेंड अभी हम लोग निफ्टी में देख रहे हैं, जहां से वो स्टार्ट हुआ वहां से मैंने फिब का फर्स्ट पॉइंट लिया और उसको 22,800 तक एक्सटेंड किया, ठीक है? क्योंकि ये हमारा जो भी अप ट्रेंड है उसका हाईएस्ट पॉइंट मुझे मिला है, ठीक है? अभी हम लोग इसका रिट्रेसमेंट देख रहे हैं, तो रिट्रेसमेंट हमें कौन से लेवल तक देखने को मिलेगा या फिर कौन से लेवल तक हम लोग अप ट्रेंड में ही है, ये कंफर्म है, करेक्ट? ऑल दिस वी कैन गेट टू नो बेस्ड ऑन दिस। सो इफ यू कैन सी, निफ्टी ने 22,000 के अराउंड ही सपोर्ट लिया है, विच इज आर 0.236 लेवल। So now this is also confirmation that fib level is giving the support currently, okay? तो currently जो भी निफ्टी का लेवल है वो हमारे 0.236 के ऊपर ही है, okay? So this is the first support. अभी अगर हमें ये जानना है कि कौन से लेवल के ऊपर तक हमारा ये जो अप ट्रेंड है वो सेफ है या फिर कौन से लेवल तक हम लोग ये रिवर्सल हुआ निफ्टी का ये नहीं बोल सकते, इट विल जस्ट बी अ प्रॉफिट बुकिंग इफ इट कम्स डाउन, तो वो लेवल कौन सा है? तो ये जो हमारा 0.618 का लेवल है वो आप देखो कहाँ पे आ रहा है, 20,400 पर, करेक्ट? सो 20,400 इज द फिबोनाची लेवल विच इज कमिंग आउट फॉर निफ्टी, जिसके ऊपर तक ये अप ट्रेंड हमें कंटिन्यूएशन दे सकता है, यहां तक प्रॉफिट बुकिंग हुई तब भी, ठीक है? So this is how when some entity or some stock or anything goes into the all-time high level zone where other, charting patterns or any chart methods are not going to help you, this particular indicator will help you to understand the certain levels. Okay, now let's go forward and let's just see how to trade using the Fibonacci retracement. Okay, so इसमें हम क्या करने वाले हैं कि कोई भी इंडिकेटर आप लो, फिबोनाची लो या फिर आप मूविंग एवरेजेस ले लो, आरएसआई ले लो, वीवैप ले लो, कोई भी इंडिकेटर आप ले लो, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ओनली रिलाई ऑन दैट सिंगल इंडिकेटर, राइट? सो इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक अ कंफर्मेशन फ्रॉम अनदर टूल एज वेल, राइट? सो हम फिबोनाची के बेसिस पे भी, सिर्फ फिबोनाची के बेसिस पे ट्रेड नहीं करेंगे जब भी ट्रेड करेंगे, बट we are going to take help or we are going to take the confirmation from another tools as well. So उससे क्या होगा कि हमें खुद और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि these levels are right and आपका जो डिसीजन मेकिंग होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, क्विक होगा, राइट? सो
यहाँ पे मैंने कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टूल को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बस एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। तो अभी पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देती हूँ कि क्या ट्रेंड है। ओके, सो यहाँ से ये डाउन ट्रेंड चालू है, राइट। सो डाउन ट्रेंड में क्या हुआ, यहाँ तक मैंने फिब को भी यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया है, द हाइएस्ट पॉइंट एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डाउन ट्रेंड। ओके, नाउ ये डाउन ट्रेंड, लेट्स से दैट आई एम अ शॉर्ट सेलर. Now I have missed this particular trend completely. All right. Now, sorry. Now this is giving some kind of pullback. Okay. So now I am trying to find out the opportunity. Where can I enter into a short trend? All right. So अभी हमने क्या डिस्कस किया था? Which is the most important level for us for the trend continuation? 0.618. Correct. So now 0.618 लेवल तक I will wait कि 0.618 लेवल पे ये क्या रिएक्ट करता है, क्योंकि पहले के अगर आप देखोगे 0.236 को इसने ब्रेक करके ऊपर आया है, 0.382 को भी ब्रेक कर लिया, 0.5 को भी ब्रेक कर लिया। सो यहाँ पे सिर्फ फिबोनाची पे आई कैन नॉट ट्रस्ट, क्योंकि हो सकता है कि 0.618 को भी ब्रेक करके ये पूरा रिवर्सल ले ले, हो सकता है ना। सो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू एड वन मोर टूल विच इज अ ट्रेंड लाइन। ठीक है, सो फॉर नाउ दिस 0.618 इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी तक ये प्राइस ने इसको ब्रेक नहीं किया है, बट हम लोग क्या देखेंगे कि ट्रेंड लाइन पे ये कैसे रिएक्ट कर रहा है। जैसे ही ये ऊपर प्रॉफिट पुल बैक में ये जो प्राइस है ऊपर ऊपर जा रहा है, तो इसने एक फॉर्मेशन बनाया है विच इज गिविंग मी अ हिंट ऑफ आई कैन ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन ओवर हियर। सो देयर इज दिस ट्रेंड लाइन जिसपे ये सपोर्ट ले रहा है। सो व्हाट कैन आई डू, जब भी ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा 618 पर, तो सिर्फ इसके बेसिस पर, just give me a second, I'm not able to see this thing. So something went wrong with my PPT. I'll just refresh and we will go forward. Yeah, sorry for the glitch. So जब भी ये प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा और ये रेड कैंडल अगर इसने बनाया, तो भी इट इज डिफिकल्ट फॉर मी। देखो ये प्राइस एक्शन आपको अभी दिख रहा है क्योंकि हम लोग ने हिस्टोरिकल चार्ट उठाया, बट इमेजिन कि ये लाइव मार्केट चल रहा है और you only have seen these many candles. You do not know what is going to happen in the future, right? So it is very difficult for me to trust only these two red candles and enter into a short trade. Correct? It must have happened with you also. तो यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करके नीचे आएगा, दैट विल बी अ कंफर्मेशन फॉर मी। करेक्ट, क्योंकि वो उसके वजह से मेरे पास दो कंफर्मेशन रहेंगे कि एक तो रेजिस्टेंस भी इसने 0.618 के काफी इंपॉर्टेंट लेवल से लिया है, और ये जो ट्रेंड लाइन है इसको भी ब्रेक करके अभी ये नीचे आ गया है। सो नाउ आई हैव टू कंफर्मेशन, सो आई कैन रिलाई अपॉन दिस, राइट। So this is a breakdown for me. All right. So this can be an entry point. Now see, once price takes resistance at 0.618 level and breaks down below trend line 0.382, 0.236 can be the next target. So what will happen once we get an entry over here? So we have to wait until this particular red candle ends. All right. We have to see actually if it is a breakdown or not. Otherwise, sometimes in the last moment this can get totally covered and it can come on the upside, right? So we have to wait for this whole candle to form and then we can enter, right? So we have entered somewhere here. So what can be our targets? Our targets can be below 0.382 or 0.236. जो भी नेक्स्ट के लाइंस है ना, वो हमारे टारगेट्स होने वाले, ठीक है। एंड हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? where will be the stop loss? स्टॉप लॉस हमारा ये जो 0.618 का लेवल है,
इसके ऊपर रहेगा। तो नाउ इफ यू कैन सी, हम लोग का जो रिस्क टू रिवॉर्ड इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में मिलेगा, उसमें क्या होगा कि हम लोग का स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। व्हाई? बिकॉज वी एंटर्ड एट अ वेरी एफिशिएंट लेवल विच वाज अ retracement into that particular trend, and now the trend has continued and we got a very good entry, right? So through this particular confirmation that we got through the trend line as well, what happened to the trade? We got a very small stop loss and we got some confirmed targets. Now I'll include one more point over here, why it is very much important to decide targets as well. देखो, जब हम लोग ने यहाँ पे एंट्री की, वी गॉट द टारगेट्स ऑफ 0.382, 0.236 और इवन द लास्ट लेवल, राइट? जो भी आप ये प्राइस देख रहे हो, ये यहाँ इसके नीचे तक गया है, राइट? बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू बुक द प्रॉफिट एट द टारगेट्स। वाई? बिकॉज अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से जो इसने रिवर्सल लिया, आपका 0.618 का भी लेवल ब्रेक करके ये पूरा रिवर्सल हो गया, पूरा ट्रेंड का ही रिवर्सल हो गया, राइट? सो whenever you find such kind of breakdowns, even if you know, आप इमेजिन करो कि आपने ये प्रॉफिट बुक नहीं किया होता, तो ये पर्टिकुलर एंट्री जो आपको इतनी परफेक्ट मिली थी, उसका कुछ यूज ही नहीं होता अगर आप इसको बुक नहीं करते, क्योंकि ये यहाँ से कंप्लीटली रिवर्स हो गया, राइट? सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग a proper stop loss into the system and having some predefined targets, right? And executing those particular trades at the predefined levels as well. All right. So this is how we trade based on the this thing, Fibonacci retracement. All right. So I tried to give you most of the explanation based on Fibonacci retracement. All right. So if you have any more questions about this particular topic, you can let me know now and I will try to answer them. Okay, so the first question is how can we get access to the previous webinars? So there is a YouTube channel of HDFC Securities and there is a separate playlist which is created for this series of webinars. The name of the playlist is Understanding Derivatives. All right. So you can watch all the recordings over there. This particular webinar will also be uploaded over there after this session. All right. You can see the recordings, and we have until now we have covered topics like price action, chart patterns, option chain analysis, indicators, and so many topics that we have covered based on the technical analysis, based on our features. All of these recordings you will find on the YouTube channel of HDFC Securities. So if you have missed any of these, you can go and check out the videos. Also, if you have any suggestions of the topics for the future webinars, like we covered the Fibonacci retracement based on some of the suggestions that we had got in the previous webinars. So we thought, like, this is a very good indicator and we should, explain this in detail to our viewers. So we picked this particular topic. So likewise, you can also suggest some of the topics to us. So if we have missed these topics, I can cover those topics into the future webinars. Okay, so there is a question, please tell entry when there is a all-time high market. So just give me a second, I'll go back and explain the entry again.
Okay, so if you can see my screen, this particular screenshot I had shared for the all-time high levels using the Fibonacci retracement. This is Nifty. So I'm going to start my Fibonacci from the lowest point till the highest point of that particular trend, and I will check out at which levels it is taking the support. Okay, so right now, see, this is right now the Nifty is above our 0.236 level, right? So what can happen? This is still our, this is still above the support level, correct? So what can be a good entry into this particular retracement is that whenever we find price somewhere near to this level, that can be a good entry. So for example, यहाँ पे अगर हमने entry ली होती तो हम लोग को ये प्राइस एक्शन मिला होता, राइट? सो एट एवरी सपोर्ट लेवल कैन बी अ गुड एंट्री विथ अ स्टॉप लॉस नियर टू द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल, ठीक है? अगर मैंने यहाँ पे एंट्री करी तो ये मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए और नेक्स्ट लेवल मेरा टारगेट होना चाहिए, ठीक है? दिस कैन बी अ 1:2 risk reward as well. Based on that also you can decide your stop loss and the target. Okay, so फिबोनाची के बेसिस पे जो भी आपको सपोर्ट देखने को मिलेंगे कि कोई लेवल पे कंसिस्टेंटली प्राइस सपोर्ट ले रहा है, दैट इज अ यू नो एंट्री एज पर फिबोनाची रूल्स. ऑलराइट, do you use volume data to take better decisions? Yes, volume analysis is a very good topic. I have covered that topic as well. You can find out the recording on YouTube channel of HDFC Securities. So there is a question, how did you draw lines at different ratios? So sir, we do not have to draw every line. We just have to connect the 2 points that I explained to you. If it is a uptrend, we have to touch the lowest point of the trend where the trend has started and the top highest point of that particular uptrend. Once you just touch, you just connect those 2 points and the levels you will get automatically. All right. Okay, so there is a very good question. The question is about the time frame to use Fibonacci. All right. So if you're a intraday trader, it will work very nice on 15-minute time frame, on 5-minute time frame. If you're a positional trader, it will work best on the 1-day time frame. But these are, you know, this is something I follow, and this is something which is commonly followed, but you can of course use it on any time frame, but 5-minute, 15-minute and 1 day are the good examples and followed very commonly. Auto fib, so there is one more indicator which is available, which is auto fib. So auto fib will give you, you know, it will draw automatically. That is also helpful, but I had to show it manually because, you know, अगर किसी को auto fib नहीं मिलता है या फिर access नहीं होता है, तो you should know how to draw it manually. So that is why I showed this Fibonacci retracement, but auto fib is also useful, works the same way. Which are other preferred indicators along with Fibonacci retracement? So I suppose by this Abhishek Davande wants to ask that what all can we include or, you know, combine with Fibonacci retracement. All right. So with Fibonacci retracement, if you already have the support resistance levels on the chart that you have drawn, all right, if you can compare those with the Fibonacci levels, that can be a good example of the combination. Otherwise the trend lines will work really nice. Otherwise the 50 and 200 simple moving average will also give very good results with the combination of Fibonacci retracement. Can we use it for options trading? Yes, you can use it for anything. This is a part of technical analysis. You can use it for even investing, even for trading, for intraday, for scalping, anything.
What do these vertical candles represent? So vertical candles, I suppose this is vertical candles or vertical lines. I'm not able to understand this question. If you can, in detail, if you can pose this question, so I will be able to answer it. Is it applicable to intraday Nifty? Yes, it is applicable to everything. Playlist name is Understanding Derivatives. It is on the YouTube channel of HDFC Securities. The name of the YouTube channel is HDFC Securities. So there is a question you mentioned that even in the downtrend, profit can be booked. Not sure I understand this. Can you please explain? So even if there is a downtrend, there can be short selling which is done, or you can trade into futures, you can trade into options, right? And you can participate into the downtrend, and that way you can book your profits. All right. So that's what I meant when I told that. How to draw it when the price reaches blue sky zone? So you have to, when the price reaches into blue sky zone, it is a uptrend for obvious, right? So you have to start from the very, start point of that trend, which is a lowest point of that particular trend, and you have to connect it to the highest point. It can be used for options as well. You can, make your decisions. So there is a question how you draw the trend line. So how do we basically draw the trend lines, and how do we draw the chart patterns? I have covered it in a very detailed webinar. So you can go and find out the webinar, which is the name of the webinar is Price Action and Chart Patterns. You will find out how do we draw all of this on the chart, and it will be helpful for you. I'll just give a small tip. Whenever we draw a trend line, we have to at least touch at least two, candle lowest or highest points. All right. So that is the basic requirement to draw a trend line. The Fibonacci will work on, this is a part of technical analysis, so it will work on any kind of entity, any kind of, chart. So you can use it for gold, crude as well. So there is one more question. Can we use it for options trading on the options chart directly? So this is a very good question. You can use it on the options chart directly, but you also have to draw it on the underlying. So for example, if you are drawing on the Nifty 22,200 call, for example, all right. So based on that, you should not only take your decision, but you have to draw it on Nifty's chart as well. So both, when you combine and when you get a confirmation that, both are giving similar kind of outcomes,
then you can decide based on that. But it will of course help you if you draw it on the options chart as well. Can long-term investors use this? Yes, you can just shift to a longer time frame. It can be daily or weekly, and you can obviously use this particular indicator for the long-term investment as well. So because I have got a lot of questions to show it live, so let me just try to show you live. How do we do it? All right. I hope all of you can see my screen right now. I have Nifty on my screen. I'm going to shift to a day's time frame. All right. So this is what I showed you, right? So यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 second. I'll just give you the example. यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है या फिर प्रीवियसली क्या हो रहा है कि निफ्टी में कौन सा ट्रेंड है ये हमें नहीं पता चल रहा है स्पेसिफिकली इस वाले रेंज में, राइट? वी कैन नॉट डिसाइड इफ इट इज अ डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड और वॉट एवर, वी कैन नॉट डिसाइड, राइट? बट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल it is very much evident that this is into uptrend, right? So इमेजिन करो कि यहाँ इतना ये जो प्राइस एक्शन है हुआ ही नहीं, आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक देखना है, ठीक है? वो भी आप देख सकते हो, बट अभी हमें अगला फ्यूचर का देखना है। तो क्या क्या होगा, जो भी जहां से भी वो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वो फर्स्ट हमें चूज करना है, ठीक है? आई विल गेट द फिब रिट्रेसमेंट ओवर हियर। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस and I am going to connect this particular point and I'm going to extend until this side. All right. अभी आपको दिख रहा है कैसे ड्रॉ हुआ? ये सारे लाइंस मुझे ड्रॉ नहीं करने पड़े, आई जस्ट हैड टू कनेक्ट दोज 2 पॉइंट्स, ठीक है? तो दिस इज एज इजी एज इट लुक्स। अगर मैं आपको ये बोलूंगी कि हम थोड़ा सा पीछे जाके एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये मान लो कि ये अभी हमने देखा ही नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं और यहाँ पे कहीं पे तो मार्केट है, ठीक है? राइट नाउ वी आर इन 23 Jan 2024, ठीक है? यहाँ पे हमें जानना है कि निफ्टी और कितना ऊपर जाएगा, रिट्रेस होगा या नहीं होगा, कौन से लेवल पर सपोर्ट है, ठीक है? ये हमें जानना है। तो क्या होगा, हमारा जो बेस पॉइंट है वो तो कॉमन ही रहेगा, और जबकि हम यहाँ पे हैं बट टॉप पॉइंट तो मेरा ये है, करेक्ट? सो ये मेरा टॉप पॉइंट से लेकर मैं यहाँ तक एक्सटेंड कर लूंगी। ऑलराइट, सो अभी आप देख लो कि अगर हमने यहाँ मतलब प्रीवियसली पास्ट में भी अगर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ किया होता तो भी हमें 0.236 पे इसने सपोर्ट लिया और उसके बाद ये ऊपर गया और अभी भी ये ऊपर ही है, इसने अभी वापस रिट्रेसमेंट लेवल पे ये आया ही नहीं, ठीक है? दिस इज स्टिल इनटू अ वेरी गुड अप ट्रेंड, ठीक है? सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे एक और एग्जांपल लेना है, आई विल ट्राई टू शो यू। ओके, सो दिस इज टुडेज पर्टिकुलर चार्ट, ठीक है? तो हम स्टार्ट से लेकर एंड तक एक एग्जांपल लेते हैं कि आज के लेवल्स हमें क्या देखने को मिले थे। ऑल राइट, सो यहाँ पे आप देखो कि 0.618 के नीचे आकर इसने वापस से रिवर्सल लिया और यहाँ उसके बाद में फिर सपोर्ट 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 लिया और फिर वापस से ट्रेंड कंटिन्यूएशन दिखाया, करेक्ट? सो यहाँ पे अगर हम लोग ने सिर्फ इसी इंडिकेटर पे के बेसिस पे एंट्री ली होती है, फर्स्ट थिंग कि हमारा ये टाइम फ्रेम बहुत छोटा है, तो जब भी हम लोग छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाते हैं तो जो भी कंफर्मेशन रहता है ना वो थोड़ा सा वीक होता जाता है। तो 1 डे टाइम फ्रेम का आपका जितना एक्यूरेसी होगा उससे 5 मिनट का एक्यूरेसी ऑब्वियसली कम होगा, बट आप ये भी देखो कि आज मंथली एक्सपायरी थी, ठीक है?
इस पर्टिकुलर लेवल पे आप देखो 0.618 पे सपोर्ट लेके इसने कंटिन्यूएशन दिखाया, यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक हो सकता है कि स्टॉप लॉस चला जाता, उसके बाद इसने ट्रेंड का रिवर्सल दिया एंड मल्टीपल टाइम्स इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया. सो दिस इज अ कंफर्मेशन दैट नाउ दिस इज टेकिंग सपोर्ट एंड दिस इज नॉट वॉलेटाइल. दिस इज अ रीजन वेयर इट इज वेरी मच वॉलेटाइल. ठीक है, यहाँ पे डिसीजन लेना भी बहुत डिफिकल्ट है कि ये फिबोनाची को रिस्पेक्ट कर भी रहा है या नहीं, ये भी समझना डिफिकल्ट है यहाँ पे. बट यहाँ पे यू आर गेटिंग अ कंफर्मेशन दैट दिस इज टेकिंग सपोर्ट, करेक्ट. सो ऑन दिस बेसिस वी कुड हैव टेकन अ ट्रेड with a stop loss below 0.618. ठीक है. So this is how it will help you to decide if it is going to continue the trend or if it is going to take a reversal or whatever it is going to do. You will get the clues based on that. All right. But of course, I will again repeat that you should combine it with another indicators or another technical tools as well to get a better confirmation. Otherwise, such things can happen. All right. So I hope now it is clear, and I hope that you're satisfied that I showed you live how to do it or how to draw it. All right. So right now I'm really short on time, and I hope to see you all in the next webinar as well. Do let us know your suggestions, whatever you feel that we should teach you. We will come up with the webinars. All right. So thank you so much all for being a nice audience and viewers. All right, the questions are very interesting, and see you all next time. Thank you.